you are solo, so you can also take a bike ride. That is only 150 rupees. और बेनोलिम बीच बहुत ही सुंदर बीच है. यहाँ पे बहुत सारे शीप्स एंड सेल्स हैं. You can see around the beauty. If you have time, you can explore this beach. और अभी हमने ये कैफ़े है सोची बीच करके, वहाँ पे गर्मा गर्म पराठे का नाश्ता किया है, जो कि काफ़ी मज़ेदार था. So there is lots of foreign crowd and it's like a chilling beach. You can just spend 2 to 3 hours. Even if you are going to North Goa, like if you want to explore Ghumakkad Bandi, तो फिर भी आप मडगांव रुक सकते हैं. आप 2-3 घंटे यहाँ पे स्पेंड करें. आना बहुत ही आसान है. यू कैन बुक योर लगेज एट क्लॉक रूम एट मडगांव रेलवे स्टेशन. हम वहाँ पे वॉशरूम में फ्रेशन अप हुए और हमने क्लॉक रूम में अपना सामान दे दिया. एक बात ध्यान रखें कि जब हम सामान दे रहे हैं तो आपका जो सामान है वो लॉक्ड होना चाहिए. सो डोंट वरी, आपको लॉक वहाँ मिल जाएगा इन जस्ट 30 रुपीज़. तो वहाँ से अपना लॉक ले लें, अपना सामान आराम से रख दें और फ्री होके घूमें. तो 200 रुपये में यू कैन रीच टू बेनोलिम एंड यू कैन जस्ट एक्सप्लोर बेनोलिम. और भी बीचेस हैं अराउंड साउथ गोवा, लाइक बेतालबाटी इज देयर, कोलवा बीच इज देयर, बेनोलिम इज देयर. सो यू कैन एक्सप्लोर दीज बीचेस एंड देन यू कैन मूव टू Ghumakkad Bandi फॉर नाइट लाइफ. कवर कर लिया है. अब हम फिर से मडगांव रेलवे स्टेशन जा रहे हैं. तो वहाँ के ऑटो वाले तो 250 रुपये मांग रहे हैं, 500 रुपये मांग रहे हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग, लेन है जो हमको मेन रोड तक पहुँचाती है और वहाँ से हमको बस मिल जाएगी ईज़िली. और ये लेन भी बहुत सुंदर है. यहाँ पे दोनों तरफ बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, शॉपिंग्स हैं, आप भी ड्रेसेस खरीद सकते हैं. तो हम हार्डली मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर है यहाँ से. हम इसको तक पहुँचने वाले हैं और फिर वहाँ से हम मडगांव की बस लेने वाले हैं. ओके